community through the COVIN Global Conclave. 142 countries participated. It has been put as an open source digital platform available to countries around the world. The Prime Minister also spoke about the success of our vaccination program. 800 million plus of our citizens have already received vaccination doses. We are looking at accelerating this, and the Prime Minister emphasized the fact that the success of this entire enterprise was also based on the organizational aspect of it, including COVID, of course. And of course, the fact that we have today come out with cutting-edge technologies. We have our indigenous vaccines. We also have developed a DNA vaccine which will be introduced for children, which is a touch vaccine. We have come up with mRNA technology. So we are also at the cutting edge of vaccine development. And Prime Minister referred to India as a manufacturing hub for vaccines for the entire world. In that context, of course, he spoke of the fact that we had announced our decision to again recommence exports of vaccines from month of October. Again, this is extremely well received in the UN and the international community. The Prime Minister spoke of global value chains in the context of Atmanirbhar Bharat, resilient supply chains that we are developing. Important emphasis was given on climate change, in which the Prime Minister pointed out that we ourselves had unilaterally gone in for a 450 gigawatt target by 2030. We were ahead in terms of meeting our expectations in the Paris Agreement, and that if we were to look at the gains that we would make in addressing the issue of climate change, it is because we have to answer the future generations. And the Prime Minister pointed out that it was important for us to ensure that we do the right thing now, so that our future generations don't question the fact that we hadn't done enough to make our planet both sustainable environmentally and something that is enduring. I think, again, when you talk about technology, the Prime Minister talked about science-based rational thinking applied to development. I think that is an important factor, that science and technology have dictated how we can best provide our development gains to as many of our people as possible, as effectively and as cost-effectively as possible also. And he also talked about, from that point of view, the development of incubators, the startup culture, the importance and promise of innovation among the youth of India, the development of satellites, 75 satellites to commemorate our 75th anniversary of independence. On international issues, you would have noticed that the Prime Minister referred to the most pressing issue of today again, which is the topic of conversation of almost every head of state and government that has spoken at the United Nations, the situation in Afghanistan. He said that countries using terrorism as a tool should note that this is a double-edged sword. I think that's a very important point to make, that you cannot think of encouragement to terrorism, because that can come back to bite you. In the context of Afghanistan, the Prime Minister referred to the fact that the plight of women, children, minorities should not be forgotten, that these basic human rights of people of Afghanistan are important. They need the help of the international community, and it was incumbent on the international community to come forward to speak in one voice on some of these issues that are important to all of us. The Prime Minister did speak about the fact that we shouldn't abuse our natural resources. This is a legacy for the future. This is a trusteeship of nature that has been bestowed on us, that our culture does, Indian culture and ethos is one that is close to nature, that we live in harmony with nature, and that is something that's important in today's तो विदेश सचिव बताते हुए कि प्रधानमंत्री ने किन किन अहम मुद्दों को उठाया, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो आतंकवाद हो। लेकिन राजीव जी, जब ये तमाम चीज़ें हम समझ रहे हैं, अफगानिस्तान का जब प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, तो ये संदेश चीन और पाकिस्तान को है या ये तालिबान की सरकार को भी है? देखिए, तालिबान की सरकार क्या कहेंगे, यह तो पाकिस्तान की सरकार है।
पाकिस्तान ने कुछ तत्वों को वहाँ बिठा दिया है। तो सीधे सीधे यह संदेश पाकिस्तान को है, और वैसे तत्व जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान में एक चुनी हुई सरकार को ध्वस्त किया, उन सब लोगों को है। और निश्चित ही देखिए, जब 1996 पुराने तालिबान .1 जिसे बोला जाता है, उस युग को याद करें या उसके पहले के युग को भी याद करें, तो आप पाएंगे कि तालिबान के आने से, जैसा कि लोगों को उन्होंने बताया था कि सारी व्यवस्था, थोड़ी वॉरलॉर्ड्स का जो कहर है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। एक आतंकवाद की जननी बनकर अफगानिस्तान उभरी, एक ऐसा महान राष्ट्र जिसका कि इतना ज़बरदस्त अतीत रहा है, वह आज के दिन में उसे एक केवल निगेटिव, केवल नकारात्मक वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो आज से करीब 100 साल पहले महिलाओं के जो लिबर्टी की बात करता था, आज के दिन जब वहाँ का शाह भी थे, जब वहाँ के जो कहते हैं मोनार्की भी थी, वो लोग भी काफ़ी आधुनिक हुआ करते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री कह रहे थे खासतौर से वहाँ महिलाओं और बच्चों के हितों का हमें ध्यान रखना होगा। अफगानिस्तान के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, क्या आपका रिएक्शन है? आज आपको थोड़ा सा भरोसा और जगह है भारत को लेकर के? भरोसा तो पहले का था जब हम यहाँ आ गया इंडिया में। अब मोदी सर से ये कहना है कि वो जो हम लोगों के साथ वादा किया है वो है क्या जी, जो लेडीज़ के साथ हेल्प करते हैं या उनको जो कुछ कहने, मेरी तरफ से ये कदीर भाई कुछ कहना चाहती है। जी, मैं एक सवाल है कि मोदी जी के अभी बोला कि हम के अफ़गानी लोग का मदद करना है। हम ये एक सवाल है, आपका मदद करना मतलब क्या है? हमारा देश का मदद करना है, लोग का मदद करना है? मैं एक आर्मी के तरफ से बात कर रहा हूँ, जवानों लोग का अफ़गानिस्तान। अगर हिंदुस्तान के मोदी जी के सीधे हमारा मदद करना है, हम लोग का तैयार हैं। हम लोग का नहीं चाहिए, अमेरिका नहीं चाहिए, रशिया नहीं चाहिए, चाइना का नहीं चाहिए। हम अगर इंडिया का हमारा साथ के मुल्क का आज़ादी कोशिश करना है, हम ये चीज़ का तैयार है। देखिए, आप तैयार हैं। और प्रधानमंत्री ने जो बात आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस तरीके से कही, उन्होंने बता दिया कि भारत भी वहां की महिलाओं और बच्चों के हितों का ध्यान रखता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।